Clostridioides difficile infection. It is caused by Clostridium difficile. Clostridium difficile is a obligate anaerobe. It is gram-positive spore-forming bacillus. Clostridium difficile, it is a former name. It was previously known as Clostridium difficile. Now the new name is Clostridioides difficile. The new name is Clostridioides difficile. Okay. It is a obligate anaerobe gram-positive spore-forming bacillus, and it causes a disease known as pseudomembranous colitis. And this disease, pseudomembranous colitis, it is associated with prolonged use of antimicrobials. See, Clostridium difficile, it mainly occurs in the western world. इंडिया में इसका बहुत कम रिपोर्टिंग हुआ है. The risk factors for Clostridioides difficile infections are: number 1, prolonged hospital stay. ठीक है, ये जो स्पोर्स हैं ये मेनली नेचर में ही फाउंड होते हैं. ये नेचर में वाइडली स्प्रेड है, पर्टिकुलरली इन द हॉस्पिटल्स. ठीक है, जहाँ पे वो पेशेंट के कोलोन में जाके डिपॉजिट हो जाता है. सो prolonged hospital stay is the first risk factor. Then prolonged antimicrobial use. Antimicrobials like cephalosporins, clindamycin, ampicillin, fluoroquinolones like ciprofloxacins, they are responsible for the disruption of normal flora in the colon, जिसके कारण फिर Clostridium difficile का infection increase होता है. Okay. Prolonged antimicrobial use is the second risk factor. Use of antimicrobials like cephalosporins, clindamycin, ampicillin, fluoroquinolones like ciprofloxacin. This causes the disruption of normal flora in the colon. Let's see the pathogenesis. This infection is toxin mediated. Clostridium difficile, it may be harbored as a commensal, पर जो टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स होते हैं उनके कारण स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है. तो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल 2 पावरफुल एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज टॉक्सिन ए विच इज़ एंटेरोटॉक्सिन and toxin B which is cytotoxin. So these two toxin A and B, toxin A is enterotoxin, toxin B is cytotoxin. These two are secreted in the intestine और इसके कारण clinical manifestations like diarrhea and pseudomembrane formation is there. So diarrhea and pseudomembrane formation, these two are the clinical manifestations of this disease, and this is due to 2 powerful exotoxins, toxin A and toxin B. See, पहला 2 रिस्क फैक्टर्स क्या था, एक तो हॉस्पिटल स्टे था और दूसरा प्रोलॉन्ग्ड एंटीमाइक्रोबियल यूज़ था. द अदर रिस्क फैक्टर्स आर एडवांस्ड एज, दैट इज़ ग्रेटर देन 65 ईयर्स, देन इम्यूनोसप्रेशन, ऑल्सो कैंसर, कीमोथेरेपी जिसके कारण भी इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है. ठीक है, so suppression of normal flora, advanced age greater than 65 years, immunosuppressions, these are the risk factors for Clostridioides difficile infection. Okay, see, ये जो नाम है difficile, it is known as difficile because there was difficulty in the isolation of the Clostridium difficile bacteria. It was so named due to the unusual difficulties involved in the isolation of the bacteria. The clinical manifestations are diarrhea and pseudomembrane. Diarrhea is the most common manifestation of Clostridioides difficile. Other manifestations are fever, abdominal pain and leukocytosis. ब्लड एंड स्टूल इज़ अनकॉमन. ठीक है, डायरिया होता है, ब्लड नहीं होता है स्टूल में. एंड सेकेंड इज स्यूडोमेम्ब्रेन. स्यूडोमेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ नेक्रोटिक ल्यूकोसाइट्स, फाइब्रिन, म्यूकस एंड सेल्युलर डेब्रिज. ये जो स्यूडोमेम्ब्रेन है, इट अटैचेस टू द अंडरलाइंग म्यूकोजा and it appears at whitish yellow plaque of size
ranging from 1 to 2 millimeter to large enough to spread over the entire colonic mucosa. Okay. Relapse after treatment is common and relapse is seen in 15 to 30% cases. तो दो clinical manifestations हैं, diarrhea most common manifestation and pseudomembrane. ठीक है, pseudomembrane appears as whitish yellow plaque. Then laboratory diagnosis. The case definition of Clostridioides difficile infection comprises of greater than equal to 3 unformed stool per day and isolation of bacilli followed by the toxigenicity testing. Stool culture के लिए selective media such as CCFA and CCYA are used. ठीक है, CCFA stands for cefoxitin, cycloserine, fructose agar. CCYA stands for cefoxitin, cycloserine, egg yolk agar. Antigen detection is through rapid test and enzyme immunoassay. मॉलिकुलर टेस्ट में PCR, रियल टाइम PCR, जीन एक्सपोर्ट, ये सब जीन्स, कुछ जीन्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि TCDA जीन विच इज़ फॉर टॉक्सिन A, TCDB जीन विच इज़ फॉर टॉक्सिन B एंड TPI दैट इज़ ट्रायोस फोस्फेट आइसोमरेज. और ये जो एंटीजन डिटेक्शन है, एंटीजन ये जो मॉलिकुलर मेथड है, molecular method is highly sensitive and specific. molecular methods में हम TCDA, TCDB, TPI genes को detect करते हैं and this is highly sensitive and specific. Then colonoscopy, it is also highly specific. ठीक है, अगर pseudomembranes are seen then colonoscopy is also highly specific. Treatment. तो mild to moderate cases में oral vancomycin or fidaxomicin is the drug of choice. Oral vancomycin and fidaxomicin, it is the drug of choice for mild and moderate cases. Oral metronidazole is the alternative. For fulminant cases, oral vancomycin and IV metronidazole is given. Okay, fulminant cases, oral vancomycin and IV metronidazole. So these are the drugs: vancomycin, oral vancomycin, fidaxomicin, oral metronidazole and IV metronidazole for fulminant cases. Other modalities of treatment is giving intravenous immunoglobulin. ठीक है, intravenous immunoglobulin, it is an example of passive immunization. Then fecal microbiota transplant in case of recurrent cases, and then fidaxomicin. See, IV vancomycin is not effective for Clostridium difficile infection. Oral vancomycin is effective. प्रिवेंशन में सबसे पहला प्रिवेंशन तो इसका जो रिस्क फैक्टर था दैट इज़ प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स. तो प्रिवेंशन में क्या हो जाएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स शुड बी स्टॉप्ड एट द अर्लीस्ट. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल शुड बी स्टॉप्ड एट द अर्लीस्ट. दिस इज़ द प्रिवेंशन. अदर प्रिवेंशंस लाइक strict hand hygiene should be followed. See, so all of the following drugs are indicated in Clostridioides difficile infection except oral vancomycin, fidaxomicin, oral metronidazole, IV metronidazole. So IV metronidazole is the answer. ठीक है, क्योंकि ओरल वैनकोमाइसिन देते हैं, फिडाक्सोमिसिन देते हैं, ओरल मेट्रोनिडाजोल देते हैं क्लोस्ट्राइडियोइडिस के इन्फेक्शन में, बट IV vancomycin is not effective.